Hello everyone. So again, hello, and let's carry out with certain MQs out there. So this is your first question. Please attempt this. Please attempt this one. So I'm gonna read this for you. With reference to government expenditure classification, consider the following. Government consider the following. Revenue expenditure includes payments, subsidies, and second statement is capital expenditure results in the financial. Third, the grants given to the states for disaster relief are always classified as capital expenditure. Please try to solve a minute. Tell you what's the answer for. So with respect to revenue expenditure, with respect to with respect to what's the revenue? Any expenditure which doesn't impact assets and called revenue. Is called assets and doesn't impact any sort of asset or the revenue. But when you talk about the capital expenditure out there, certainly an expenditure that impact the assets and liabilities of government out assets and out there. For example, if government is going to a lot of money there for the roadways and the airport out there, it will be classified. It will be classified as a capital, as it will lead to increase in the assets out there. Whenever government pay its loan out there for the premium or any sort of loan that it has taken over the period of time from IMF or World Bank out there, then it also be considered as a capital expenditure as it's reducing the liabilities of at it is reducing the done. Revenue expenditure include interest payments, subsidies, and pensions. Exactly, interest payments, subsidies, and pensions doesn't impact any sort of assets and liabilities. Doesn't impact any sort of assets and liabilities out there. And it will be called as capital expenditure results in the creation of physical and financial assets. Absolutely fine. Absolutely fine because the capital expenditure does results into assets. Does result into these in assets. Grants given to the states for disaster relief are always classified as capital expenditure.
grants given to the states for disaster relief are always classified as capital expenditure. That's a false statement. Grants given to states is considered to be a what we called, that's been classified, is called revenue expenditure. Revenue expenditure, not capital. This statement is wrong. Answer is 1. Please solve this question. सही है, absolutely fine. Consider the following statement with respect to agriculture in India. Agriculture is a state subject under the 7th schedule. The minimum support price is legally binding on private traders under the Essential Commodity Act. Agriculture census is conducted after every 5 years. After every 5 years out there. Please attempt this. Please attempt this. The answer. When I talk about the agriculture census conducted after every 5 years, it's a right statement. The right statement out there. Agriculture is the state subject under 7th schedule. Again, it's a right statement. Again, it's a right statement out. So, minimum support is legally binding. No, it's not. No, it's not legally binding out. Not legal. Not legally binding out there. Not legally binding. That's why the farmer protests are taking place. Why the farmer protests are taking. That's why the farmers protest started in 20 and 20. Because they were demanding what? To legalize, back up. To legalize or to back up out there, to create a law under there. Otherwise, it's just a policy out there. Yeah, Fulleth, it's 1 and 3 out. The 1 and 3 statement. Otherwise, what will happen? Otherwise, what will happen? It will just lead to a, it depends completely on the whims and fancies of the government. They can back out at any moment. They can back out at. Solve this question, please. Solve this one. So, fiscal policy. Consider the following statements regarding the fiscal policy in India. Consider the fiscal policy in India. An increase in fiscal deficit always leads to higher inflation. Capital expenditure under the fiscal policy, the multiplier effect on economic growth. FRBM Act provides target for both fiscal deficit and revenue deficit. Or fiscal deficit and revenue deficit out. I hope that's fine with you. I hope that's fine with you. क्या होगा आंसर? क्या होगा? An increase in fiscal deficit always leads to higher inflation. Pulit का आंसर है B. Capital expenditure under fiscal deficit has a multiplier. RBI Act provide target for fourth fiscal. That's right. B is the answer. That's right. B is. पहला क्यों नहीं है?
An increase in the fiscal deficit always leads to higher inflation. Why it doesn't lead to? Explain. Increase in fiscal deficit. Increase in fiscal deficit. That means government is borrowing more. That means government is borrowing more. That means government is borrowing more. Along with that, the government is borrowing more. Government is borrowing more. Government is borrowing means that means adopting what we call as expansionary. It's been adopting what we call as an expansionary policy. It's been adopting as what we call as expansionary policy out there, as it has been with expansionary policy out there. What that means? If government is gonna spend more, that means will lead to disposable income. People gonna demand more. Disposable income. People gonna demand more. If people gonna demand more, of course it will eventually increase in income. Will lead to what? Take an example. There has been disposable income, and if there has been say for example the demand has been 120 has been demand at the same time. Supply also increased by 120. It's meeting the supply also in 120. Supply being increased. That means resulting in what we called as zero effect. Zero effect. Or zero effect because supply is meeting. Suppose now the demand is 150. Supply has been 130. The gap of 20 units, the gap of units out there, it's gonna lead is in inflation. This is called aggregate demand. Aggregate demand. I hope that aggregate demand. I hope that's clear with you. That's why isn't fiscal deficit not always lead, not all.
there are exceptions. Exceptions. Go ahead with this. Go ahead with this. Good evening, job grade student. For you, phenomenon of Dutch disease refers to a situation where high inflation fall in domestic condition where excessive foreign capital inflows lead to a booming stock market, resource-driven economic growth that leads to decline in manufacturing export due to currency appreciation, a policy error where subsidies lead to overproduction. Try this out. Okay, so Dutch is a very yeah, there is policy. Dutch disease. Take an example of African nation. They're prominent, very rich resources out there, but again, not developed. Development. Take an example, African nation. African nation. What they will do? They are rich in that. Rich in that. Of course, they're gonna export that. They're gonna export that. A lot of foreigners would buy that. Example can be seen in the form of lithium, gold, lithium, gold. So again, when they're gonna export a lot of stuff out there, or a lot of foreign currency out, gonna receive a lot of foreign currency out, and foreign currency would be converted into what we call as a local. It will eventually, they are exporting a lot. That means they are receiving a lot of currency out there. It will lead to appreciation of just a stimulation of model out there. Consider that African nations have a currency of rupees out there, and we are comparing this with earlier a dollar. What would be $1 is equal to, but as it lead to appreciation of that, $1 will be called 50 rupees. Now, because there has been an increase appreciation of currency, now import for other nations from African will be very difficult because they would require more dollars to purchase certain things because of appreciation. Now, if this African states out there become so much of rich in what we call as a manufacturing or services, they would not work out for them. This would not work out for them. This would not work out for them. Appreciation. A lot of foreigners would not be able to buy it from here. It will only become a natural resource-driven based economy out there, nothing else. And that is what African nations are doing. They are just based on the natural resources. As soon as they got exhausted, they have nothing, absolutely nothing. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओके, हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ कि जब अफ्रीकन नेशंस ऑब्वियसली दे आर नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी हो, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. जब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो, करेंसी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग खरीदना चाहेंगे उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हो रहा है. लिथियम और गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, गोल्ड में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, जिबूटी वगैरह की कंट्रीज में बहुत एक्सपेंसिव है. अब अगर उस अफ्रीकन नेशन में एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एक अफ्रीकन नेशन का घाना में अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंक्रीज भी हो जाए तब भी कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि उनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी. भाई मुझे उनके मान लो ना, मुझे $1 देना पड़ रहा है सिर्फ 50 रुपए की चीज खरीदने के लिए. पहले मैं $1 देता था, मुझे 70 रुपए की चीज मिल जाती थी, अब मुझे सिर्फ 50 रुपए की चीज मिल.
मतलब अगर मुझे और डॉलर देने पड़ेंगे, मेरे लिए चीज एक्सपेंसिव होगी, मतलब गोरों के लिए चीज एक्सपेंसिव होगी। एज अ रिजल्ट ये वाली इकोनॉमी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। कहां पे? नेचुरल बेस्ड इकोनॉमी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज बेस पे। नेचुरल रिसोर्स बेस्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। होप दैट्स क्लियर विद यू। दैट्स आंसर ऑफ कोर्स आपका बनेगा रिसोर्स ड्रिवन इकोनॉमी दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ड्यू टू एप्रिसिएशन। ट्राई करो इसे। आ गया है ट्रिप्स से रिलेटेड आंसर आया। ओके, ट्रिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रिप्स mandate minimum standards of intellectual property rights across all WTO members. The TRIPS countries cannot grant compulsory license under any circumstances. Indian Patent Act was amended to comply with the TRIPS obligation. यार सेकंड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत ही है। आंसर बाय डिफॉल्ट ही जब मैं 2 को गलत करता हूँ तो 1 and 3 आंसर 1 and 3 का एग्जांपल देता हूँ कि कंपल्सरी लाइसेंस एक्टिव होती कंपल्सरी डी भी नहीं है। कंट्रीज कैनॉट ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, गलत हो जाएगी। आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। कंपल्सरी लाइसेंस बता देता हूँ होता क्या है। देखो इंडिया में रिसर्च बहुत कम है, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है। जब मैं कह रहा हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितनी स्पेंडिंग होती है? नॉट इवन 1%, लेस देन 1%, लेस देन 1%। जीपी स्पेंड ओवर R&D। दैट्स वाई आपको पता होगा कि रिसर्च ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे PhD होल्डर्स भी जो क्या कर रहे हैं, वैसा जॉब दी, जॉब ग्रेड दी। अगर आपको पता हो कि स्पेंड ओवर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा स्पेंड गवर्नमेंट के लेस देन 1% ऑफ GDP स्पेंड देखते हैं PhD होल्डर्स होते हैं 5 नौकरी। सेम हिसाब है क्योंकि रिसर्च ही नहीं होती तो उनकी नौकरी। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे इनोवेशन नहीं तो पेटेंट भी नहीं होता। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने, मान लीजिए आपने कुछ बड़ी इनोवेशन कर कुछ बढ़िया सा इंजन निकाल दिया जो आज तक किसी ने इंजन ऐसा गाड़ी का नहीं निकाला, आपने उसका पेटेंट ले लिया तो जनरली 10 से 20 साल का होता है। इसका मतलब है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, कोई दूसरा उसे कॉपी नहीं कर सकता। अगर दूसरा कॉपी करेगा तो ऑब्वियसली फाइन भरने पड़ जाते हैं और फाइन करोड़ में होते हैं। तो यहाँ नहीं होता, ऑब्वियसली यहाँ रिसर्च नहीं हो रही तो कुछ नहीं। ऐसे ही सर मेडिकल रिसर्च में भी इंडिया बहुत कुछ आगे है नहीं, हान है नहीं। आपको पता होगा कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत इमीडिएट दवाइयां होती हैं, कैंसर की बहुत इंजेक्शन इमीडिएट चाहिए होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो इंडिया की देन नहीं है, बाहर बने हैं। जब बाहर बने हैं ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने अपना दिमाग वगैरह लगाया तो पेटेंट लगा लेते हैं। जब पेटेंट लगा लिया तो और कोई बना नहीं सकता, इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई होगी।
इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई है, इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई है। जब लिमिटेड सप्लाई है इसका मतलब है कि उसका प्राइस आप कितना भी इंक्रीज करो, प्राइस कितना भी इंक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ मोनोपोली आउट देयर, इट्स अ मोनोपोली आउट देयर, इट्स अ मोनोपोली आउट। अगर एक ही बंदा सारी चीज कर रहा है, अब एक ही सारी इंसान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, एक ही बंदा कर रहा है और एक ही इंसान रिसर्च कर रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो वो इंजेक्शन सेल कर रही है किसी भी अप्रोप्रिएट बीमारी वगैरह का, तो आप समझ सकते हैं प्राइस कुछ भी रखे। मान लीजिए कैंसर बीमारी है, उसके लिए कोई इंजेक्शन आता है, हाइपोथेटिक कोई इंजेक्शन आता है, उसमें अगर कोई एक ही इंडस्ट्री है तो वो कितना भी प्राइस रखे, 10 करोड़ का रख दे, 15 करोड़ का रख दे, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता। WTO में एक चीज होती है, WTO में कंपल्सरी लाइसेंस, ये क्या कहती है, कहती है ऐसे तो अगर बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या फिर मेडिकल रिसर्च है, वो अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे हो गए तो फिर तो बहुत लोग मरने वाले, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है तो कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि आप उसकी कॉपी बना लो, एक कॉपी सॉल्ट आप कॉपी वगैरह कर सकते हो और उसका निकाल लो। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप देखते हो स्कीम चलती है जन औषधि योजना, जन योजना, यहाँ क्या होता है, दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, दवाइयाँ बहुत, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्ट कॉपी पेस्ट होता है और आपको दूसरी कंपनी के, मतलब इन द सेंस कंपनी का धब्बा उस पर लगा होता है और आपको वो बेच देते हैं। सिमिलरली कंपल्सरी लाइसेंसिंग में वो चीज़ पेटेंटेड है, उस चीज़ को कॉपी कर सकते हो और उसे सस्ते में बेच सकते हो, ताकि लार्जर पॉपुलेशन के, अगर इंडिया जैसे शहर में और इंडिया जैसे देश में अगर किसी चीज़ का बहुत, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन बहुत एक्सपेंसिव कर दोगे तो फिर तो सारे डायबिटिक पेशेंट बन ही जाए, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। तो को बहुत जो कंपल्सरी चीज़ें हैं उस कंपल्सरी लाइसेंस मिलता है टू ग्रो दैट थिंग, अडेप्ट दैट थिंग, और कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ताकि ताकि लार्जर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियरी हो, बेनिफिशियल हो पाए। तो यही था कि कंपल्सरी लाइसेंस आप मिल सकता है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर 1 and 3, 1 and 3। ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना ही है। कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई आपका अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डाउट है, यूपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। क्वेश्चन इतने ही हैं और इतना ही आपके ऊपर जाना है, अभी दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं। अगर मैं आपको बताऊं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी क्या होती है, जैसे मैं पेटेंट कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ठीक है। अब आगे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी आ गए जिसको आप जीआई टैग कहते हैं, ठीक है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, जीआई टैग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। एक और चीज़ अब आ गई है, एनएफटी आया है, एनएफटी का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, एनएफटी कॉल्ड नॉन फंज टोकन्स, नॉन फंजिंग टोकन्स, एनएफटी टोकन्स होते हैं। फंजिंग टोकन्स, कॉपीराइट पेटेंट लगता है रिसर्च में, पेटेंट मोस्टली लगता है रिसर्च पे, कुछ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च होगी। कॉपीराइट लगता है आपके टेक्स्ट में, कॉपीराइट लग जाता है कि आप किसी की बुक का टाइटल, किसी की बुक का टाइटल उड़ा के चोरी कर दो या किसी का पैराग्राफ उठा के चोरी कर दो तो कॉपीराइट लग जाता है। किसी के गाने की धुन है तो आपने डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉपी कर दी तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है। यूट्यूब में बहुत बार होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। जीआई टैग होता है किसी चीज को सम्मानित करना कि ये उसी स्पेस की है। जैसे जैसे असम टी, असम टी,
असम की चाय बहुत फेमस है, वहां पे जीआई टैग मिल जाएगा, यार देखो असम की चाय है, असम की चाय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जब मैं डब्ल्यूटीओ का लेक्चर लूंगा तब हम डिटेल में तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे इसको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो आता ही, उसमें हम ये डीप, उसमें हम डीप डिटेल डाउन पढ़ेंगे, तभी मज़ा आएगा टॉपिक को पूरा कवरेज करने में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में बहुत कुछ है। अगर मैं बताऊं डब्ल्यूटीओ आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन आता है हर बार। यहाँ पे होते सब्सिडीज आती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर पर सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी, उसके बाद आएगा एम्बर सब्सिडी, उसके बाद कौन सी सब्सिडी आएगी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये सारी सब्सिडीज आती हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, टसल, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टसल बिटवीन यूएसए एंड, टसल बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, सब्सिडीज को लेके क्या चक्कर। उसके बाद ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड बैंक आ जाता है एंड आईएमएफ आ जाता है, इनके बारे में तो पढ़ना ही है। डब्ल्यूटीओ की स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ना है, क्या क्या डब्ल्यूटीओ की स्ट्रक्चरिंग है, इनकी लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है उसमें क्या क्या बात हुई है, ये सारी चीज़ डब्ल्यूटीओ, तब आपको सारी ये चीज़। डब्ल्यूटीओ में फिर आता है क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है रिजर्व ट्रांच पे, रिजर्व ट्रांच ये आईएमएफ का पार्ट हो जाएगा, करेंसी क्या होती है, रिजर्व ट्रांच वगैरह वो पढ़ेंगे। स्पेशल ड्राइंग्स राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ये सारी चीज, हाँ बिल्कुल, ब्लू बॉक्स हो गई, ये सारी चीजें में डिस्प्यूट चलता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, तीनों की सब्सिडी पता करेंगे क्या है, तीनों पता करेंगे क्या है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, टसल क्या चल रहा है, क्या फिशरीज को लेके सिस्टम चल रहा है, क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्यों यूएस से लड़ रहा है, उसमें हम कवर करेंगे कि टैरिफ भी क्यों लगा रहा है यूएस आजकल, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांच वगैरह, और क्या है, क्यों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यूएस का ज्यादा होल्ड है, ये सारी चीजें हमने पढ़ने वाले। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर कमिंग।